Assalam O Alykum. Welcome back to my YouTube channel, English with Rabia Hassan. Viewers, here you can learn so many things related to English grammar. Today we will discuss the perfect continuous tense, and we will discuss in different time periods. We will discuss it in present, past and future as well. So let's start the video. So viewers, the first step is to understand perfect continuous tense is the identification of that tense, and we are going to discuss the present perfect continuous. This tense is the mixture of perfect tense and the continuous tense, and we have already discussed both of them. So identification is saying to you उर्दू में जुमले के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आता है. We know that continuous tense has the identification mark raha, rahi, rahe. But where is the perfect? We will discuss the use of the perfect in the formation in the identification. Continuous tense will express itself. But how we can differentiate in between present continuous tense and in present perfect continuous tense? Here is the difference you can see. उर्दू और इसमें वक्त या मुद्दत के बारे में भी बताया जाता है. So one thing that is very clear, in present continuous tense there is no time limit, but in present perfect continuous you will find time, period, any duration. So इसमें क्या है, वक्त या मुद्दत आ जाती है जो इसे डिफ्रेंशिएट करती है कंटिन्यूस टेंस से. एग्जाम्पल्स आर वो सुबह से काम कर रहा है, वो सुबह से काम नहीं कर रहा है, क्या वो सुबह से काम कर रहा है. So viewers, have you seen that sub is giving you the टाइम पीरियड, इज गिविंग यू द ड्यूरेशन, वक्त या मुद्दत के बारे में बताया जा रहा है. एंड रहा है इज टेलिंग यू अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द टास्क, आपको बताया जा रहा है कि कोई काम कंटिन्यू है लेकिन टाइम लिमिट के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Viewers, as you all know that in the first step we used to discuss the formation in the positive form. So in present perfect continuous, as we already know, this is the mixture of perfect and continuous tense. तो हम यहाँ पर इन टेंस को फाइंड आउट करेंगे कि इन्होंने अपना कैसे रोल प्ले किया है फॉर्मेशन में. इन द पॉजिटिव फॉर्म वी ऑलरेडी नो दैट सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट. सो ये पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई. नाउ द नेक्स्ट थिंग, लुक एट दैट perfect. We know that the perfect tense has the use of has or have. So this is from the perfect tense, and continuous tense is having been plus verb plus ing. We already know that continuous tense always contain first form of the verb plus ing. But what is new in this? Here are two things that you have to keep in your mind. Between perfect and continuous you have to put been. You can see by my annotation. In the present perfect continuous, I will repeat it for you. In perfect and continuous you have to introduce been to create the difference, to give it the innovation, plus object, then the object will come, and then at the end you have to use since और for. आपको since या for को यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है I will tell you in the next slide. तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि पॉजिटिव फॉर्म की फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि हम जानते हैं. देन आपको इसके परफेक्ट के रूल को प्ले करते हुए हैज या हैव का इंट्रोडक्शन करना है, एंड देन आपने बीन को इंट्रोड्यूस करवाना है, प्लस first form of verb and ing, and we already know that ing always comes with the first form of verb.
ये कभी भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता। देन इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट, अगर कोई किया जाने वाला काम भी एक्सप्लेन किया जा रहा है तो आप आईएनजी वर्ब आईएनजी के बाद उसे लिख देंगे। एंड देन एट द एंड वक्त या मुद्दत को एक्सप्रेस करने के लिए इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस you have to use since or for. This is not difficult at all. If you will focus over the rules of that, then you can easily keep this thing into your mind. The next is the formation of the negative form. We know that negative means to give the answer in the no. So here is the formation: subject plus has have and not plus been. I have seen so many persons used to put been in between have been not. No, that is wrong. You have to use it like has not been plus first form of verb and ing, and then if there is any object plus since or for. And then at the end we will discuss the formation of the interrogative form. Has or have will come in the start. Only has or have we have to extract it from the statement, and then we have to put this in the start, and then remaining statement will be the same as like in the positive or in the negative form. Has or have plus subject plus been. Don't forget that been will come after the subject, not before the subject. And then verb plus ing plus object, and then to express the time or duration or period you have to use since or for. This is all about the formation of the present perfect continuous. Viewers, if you will learn the formation of the present perfect continuous, then it will be very easy for you to understand that tense in other time periods like in past or future. So we are moving towards the examples of that. Before giving you the examples of present perfect continuous tense, I would like to explain the use of since and for. I know so many times you have used it, but with the correct concept, you have to use it always in your sentence, and I am going to explain that use of for. It's very easy, but it's a little bit tricky. What is that? We use for with a period of time in the past, present or future. Viewers, here I would like to tell you one thing कि जब भी हमने for use करना होता है, we use it for duration. फॉर पीरियड हम इसे किसी भी पीरियड के लिए, किसी पीरियड को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। वो डिजिट में भी हो सकता है, वो आपको ड्यूरेशन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी हिंट है यूज़ ऑफ फॉर के लिए कि हमेशा फॉर जब भी आता है ये टू वर्ड्स के साथ यूज़ होता है। जब हम टाइम को, जब हम पीरियड को टू वे में या टू टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो तब हम फॉर को यूज़ करते हैं। कैसे? आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे 7 मिनट्स, अब 7 मिनट्स आपके पास पास्ट में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। दैट इज नॉट क्लियर हियर, बट 7 मिनट्स आर इन 2 यूनिट्स. देयर इज द टाइम इन 2 यूनिट्स. 7 is in digits and minutes is in English, so we will use for here. 3 weeks, this one is also in 2 units. 3 weeks, कौन से 3 weeks? We are not sure about that. So ये आप कोई भी past, present या future किसी के भी consider कर सकते हैं. And then 2 days, 5 months, etc. So whenever there is the time in 2 units, then you have to use for. Use of since is we use since with a point in time in the past. बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सिंस आपको एग्जैक्टली बता देता है कि ये काम कब से शुरू किया गया और ये काम अभी तक जारी है।
कैसे? आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल 8 o'clock एंड वन थिंग मोर दैट इज कि यहाँ पर टाइम लिमिट 1 यूनिट में एक्सप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हिंट आपके पास है, वी हैव टू पुट सिंस हेयर 8 o'clock। तो कोई किया जाने वाला काम जो किया जा रहा है, अगर माली पौधों को पानी दे रहा है या कोई पढ़ रहा है या कोई कपड़े धो रहा है, तो वो 8 बजे से धो रहा है और अभी तक वो काम कंटिन्यू किए हुए है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1 जुलाई 1989। कोई अगर 1989 से स्वीट्स बना रहा है या क्लॉथिंग का, किसी क्लॉथिंग की ब्रांड है किसी की, तो वो तब से काम कर रहा है और प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू किए हुए है। देन एट द एंड दिसंबर। सो this is all about the use of since and for. Now I am moving towards the example of present perfect continuous tense. Viewers, you can see that उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। 8 बजे मीन्स मॉर्निंग के 8 बजे से कोई काम अब तक किया जा रहा है एंड द टाइम इज इन सिंगल यूनिट। सो द टीचर हैज बीन टीचिंग since 8 o'clock. The teacher is the subject, has is coming for perfect and been is for perfect continuous and teaching is verb plus ing, and then there is the use of since to express the time limit. I hope आप इसे रूल्स के साथ मैच करेंगे, जैसे कि हम इसकी पॉजिटिव फॉर्म की फॉर्मेशन में पढ़कर आ चुके हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं। उस्ताद 8 बजे से नहीं पढ़ा रहा है, the teacher has not been. Have you seen, viewers? Not is coming in between has and been, not after has been. So you have to put it between both of them. Teaching since 8 o'clock, and the last one is about the formation of interrogative form. क्या उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है? Has the teacher been? Been is coming after the subject. Has the teacher been teaching since 8 o'clock? This is all about the concept of present perfect continuous. Now we are moving towards the next step. Viewers, look at the identification of past perfect continuous tense. That's very simple. Only period will express itself in the identification. Remaining statement will remain the same as like in present perfect continuous. Let's observe this. उर्दू में जुमले के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आता है, प्लस डोंट फॉरगेट इन दिस वक्त या मुद्दत के साथ ये चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं। एग्जाम्पल्स आर, वो यहाँ 5 साल से रह रहा था, वो यहाँ 5 साल से नहीं रह रहा था, क्या वो यहाँ 5 साल से रह रहा था? सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. Look at the formation of the past perfect continuous. We will discuss it in the positive form first. Subject plus had. Had comes for past, so there is been plus verb ing, first form of verb ing plus object if there is any object. अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो देन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा वहां पर. एंड देन एट द एंड सिंस और फॉर. Now here is the turn of the negative form of past perfect continuous tense. Subject plus had not plus been plus first form of verb ing plus object plus since or for. So interrogative form is had plus subject plus been plus verb ing, first form of verb ing plus object, and then since or for. Viewers, इसकी फॉर्मेशन सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह है, लेकिन अपने टाइम पीरियड को, अपने ज़माने को चेंज करने के लिहाज से यहाँ पर हैज़ हैव की जगह हैड ने ले ली है, ताकि वो उसको डिफ्रेंशिएट कर सके कि मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ. एग्जाम्पल्स आर, वो सुबह से नहा रहा था. He had been taking bath since morning. वो सुबह से नहीं नहा रहा था. He had not been taking bath since morning.
क्या वो सुबह से नहा रहा था? Had he been taking bath since morning? Examples will explain you more that the formation is exactly like the formation of present perfect continuous. There is nothing new but had. So I am moving towards the next. Future perfect continuous tense identification is उर्दू में जुमले के आखिर में रहा होगा, एज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, रही होगी या रहे होंगे आता है वक्त या मुद्दत के साथ। एग्जाम्पल्स आर माली 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा, माली 4 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। क्या माली 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा? नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ दैट. Viewers, firstly we will discuss the formation of the future perfect continuous tense in the positive form. Subject plus will have. There have will come. There is no use of has. So the next is been plus verb ing plus object plus since or for. I will repeat it for you. Subject plus will plus have plus been, and then first form of verb ing plus object, and then at the end we all know that since or for will come according to their expression. Now the negative form is subject plus will not plus have plus been plus first form of verb ing plus object, and then since or for, and then the question form, or we can say that the interrogative form, will plus subject plus have plus been plus verb ing plus object, and then since or for. In the negative form not comes, and in the positive form subject comes first, but in the interrogative form will be at the start of the sentence. So you can see have will come, have been will come after the subject. So examples will explain it more. माली 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा. The gardener will have been watering the plants since 4 o'clock. So माली 4 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा. The gardener will have not been watering the plants since 4 o'clock. And then क्या माली 4 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा? Will the gardener have been watering the plants since 4 o'clock? So viewers, this is all about the formation of future perfect continuous tense. Have you observed कि तीनों time periods में मैंने आपको since की example दी है, but I would love that if you will give any example related to for to me in the comment section. And I hope you also liked today's video. So viewers, thank you so much for listening me. Kindly subscribe to my channel, and if you liked my video, so share my video as well, and I will meet you in the next video soon, inshallah. Allah Hafiz.